इतने साल क्यों लगा दिया? तो अब एलएओ क्या इंक्वायरी कर रहा है? एलएओ को पार्टी बना लेंगे, ये तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्यों बना ले? एलएओ तो आप ही का आदमी है। पार्टी तो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्यों वैसे बुला के आप नहीं पूछ सकती? पार्टी नहीं है तो आप नहीं बुला सकते उसको। एलएओ कहीं फॉरेन डिपार्टमेंट क्या, फॉरेन कंट्री का है क्या? है तो मैडम पार्टी एक में शायद नहीं है किसी में। एक में नहीं से क्या होता? पिछले कितने सालों से आप इनकी लैंड यूज कर रहे हैं? कितने सालों से? फिर आपने कहा ये लैंड यूज कर रहे हैं, यूज करने से क्या मतलब उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा? कभी आपने किसी लैंड एक्विजिशन में ये अमाउंट कम करते देखा कि ये भी आप भी यूज करोगे इसलिए हम इतना अमाउंट कम दे रहे हैं आपको? व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज दिस मैडम कि ये यूज करें इसलिए इनको पैसा नहीं मिलेगा? कीप योर सेक्रेटरी प्रेजेंट। एलओ भी आप ही का ऑफिसर है, पैसा अभी भी स्टेट के ही पास है, इनके पास नहीं आया पैसा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गया है, इनको क्या मिल रहा है उसमें? पैसा जब सारा मिल जाएगा इनको। कब मिलेगा? आज तक पैसा नहीं मिला है और आप टेक्निकली बता रही कि एक पिटीशन में एलओ पार्टी नहीं है इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। Today in the morning we sought permission from your lordship to present this application for exemption for personal presence. Although there was no personal presence directed on the last date of hearing, but on 1/11/2023 your lordship has directed the principal secretary to appear on 29. 29 he was present before this honorable court, but your lordship was not available. It was listed before honorable justice Subodha Brinkar sir. तो क्या हो गया? कोई टाइड अप थोड़ी है मैटर। हाँ, मैटर वाज नॉट टाइड अप, वहां भी डिसाइड हो जाता। बट उन्होंने कहा कि सेम बेंच पे जाने दीजिए, और उन्होंने उस दिन पर्सनल प्रेजेंस के लिए नहीं कहा, but still I am moving the application if your lordship will clarify. My lord, in this matter we have deposited the amount before the LAO, my lord. And they have not made party to the land acquisition officer. Thereafter the LAO has also issued notice under section 11, my lord, and called the objections, my lord. And now it is in the process of disbursement of the amount, my lord. डिले का क्या एक्सप्लेनेशन है? इतने साल क्यों लगा दिया? डिले का हम इंक्वायरी करके और एरिंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट सेक्शन भी ले गए, वो भी हमने इस पर लिखा हुआ है। दोनों चीजों की परमिशन हमने मांगी है, एडिशनल रिप्लाई की भी और अब एलएओ क्या इंक्वायरी कर रहा है? एलएओ एक फॉर्मल जो सेक्शन 11 के नोटिस उन्होंने किए हैं, नोटिफिकेशन भी हो गया है, पेपर पब्लिकेशन भी हो गया है। नाउ दे विल गेट द मनी, मला, विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट जो भी एलएओ को पार्टी बना लेंगे, ये तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। क्यों बना ले? एलएओ तो आप ही का आदमी है, आप ही रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एलएओ को, उसको क्यों पार्टी बनाना? व्हाई ऑल दीस टेक्निकलिटीज? पार्टी तो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? रिप्रेजेंट करेंगे, बट पार्टी तो बनाना। क्यों बनाना पड़ेगा? तभी आकर एलएओ से भी हम पूछ पाएंगे कि किसको। क्यों वैसे बुला के आप नहीं पूछ सकती? पार्टी नहीं है तो आप नहीं बुला सकते उसको। एलएओ कहीं फॉरेन डिपार्टमेंट क्या, फॉरेन कंट्री का है क्या? प्रोसेस में है, सारी चीजें हो ही रही हैं, पर the collector and district land acquisition officer is a party, my lord, and the sub-divisional officer, land acquisition officer is also party, my lord. Just from number 4 and 5, my lord. है तो मैडम पार्टी। एक में शायद नहीं है किसी में। एक में नहीं से क्या होता? What type of objection, madam? If you are so technical, then this court can not made party to the LAO, but otherwise then you explain each and every day of delay and who is the responsible officer. If you are so technical, then we can be more technical than you. No, will not condone all this delay on your part. You have taken a land of a farmer and used it for road, and you are not paying anything till date. Well, the amount has been deposited and we are. You are not obliged anyone. Well, that road is not for the. पिछले कितने सालों से आप इनकी लैंड यूज कर रहे हैं? कितने सालों से? Also using this road, they have never objected for this construction, my lord. This road was constructed, my lord. They never objected. It was in the process. Some delay has. अच्छा, they are using land, so that's why they are not entitled for compensation. This is your objection. I'm not saying that they are. अब फिर आपने कहा ये लैंड यूज कर रहे हैं, यूज करने से क्या मतलब उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा? किसी एक के लिए बनता है, सभी कर रहे हैं।
So everyone is using that. कभी आपने किसी लैंड एक्विजिशन में ये अमाउंट कम करते देखा कि ये भी आप भी यूज करोगे इसलिए हम इतना अमाउंट कम दे रहे हैं आपको? हम कम दे ही नहीं रहे सर, जितना और तो व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट इज दिस मैडम कि ये यूज कर रहे हैं इसलिए इनको पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं कह रहे हम कि फिर? ये यूज कर रहे हैं इसलिए नहीं मिलेगा या ये Keep नहीं। your secretary present. This type of argument is there. And explain who are responsible for delay in for so many years. He conducted an inquiry also. Nothing is on record as on today's show. Show causes. And fact remains that they have not received till date single penny. Cause notices have, मतलब it has been deposited with the LAO. And LAO भी आप ही का ऑफिसर है, मतलब पैसा अभी भी स्टेट के ही पास है, इनके पास नहीं आया पैसा, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को गया है, मतलब इनको क्या मिल रहा है उसमें? पैसा तो सारा मिल जाएगा इनको। कब मिलेगा? आज इस प्रोसीडिंग 2 महीने हो गए इसको करते हुए, आज तक पैसा नहीं मिला है। My lord may kindly permit my applications so that your lordship can. और आप टेक्निकली बता रही कि एक पिटीशन में LAO पार्टी नहीं है इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर कि पैसा नहीं मिलेगा, मैंने कहा LAO के पास पैसा जमा है। मैडम यू आर एडिशनल एजी, आप LAO को बुला के बोल नहीं सकते इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करिए? सर डिस्ट्रीब्यूट पार्टी नहीं है तो आप बुला नहीं सकते उसको क्या? सर जो एक फॉर्मल ऑब्जेक्शन है सेक्शन 11 का, वो कॉल करके और इमीडिएट इनको डिस्ट्रीब्यूट ही कर रहे हैं। अब काहे का फॉर्मल ऑब्जेक्शन जब इनकी लैंड आपने ले ली और रोड बना ली है, अब काहे की वो एक्विजिशन प्रोसीडिंग? अब तो आपको सेल डीड से ही खरीदना पड़ेगी, there is a वो judgment. भी मार्केट रेट पे। अब बैक डेट में कैसे करेंगे एक्विजिशन प्रोसीडिंग सर? My lord, there is a judgment of full bench of honorable apex court, my lord, हम्म, which says कि अगर लैंड एक्वायर कर ली है या कंपनसेशन, दोनों में से एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गई है तो वो लैप्स नहीं होगा फिर। my lord, 2020 का मेरे जजमेंट। लैब्स पे ग्राउंड ले भी नहीं रहे। my lord, इनका कहना है पहले प्रोसीडिंग लैप्स हो गई, अब फिर से इनिशिएट कर रहे हैं, फिर से सब हाँ, process- वो कलेक्टर का लेटर है कि लैब्स हो गई। कहाँ है मिस्टर सिंह का एक्सप्लेनेशन? मिस्टर व्यास, वो मिस्टर राठी आए थे, वो कह रहे हैं प्रोड्यूस करेंगे ओरिजिनल, तो उसकी डेट दी है 16 तारीख। It is correct that there was a lapse on part of the field officer who did not include the amount of so-called notice has been issued to the defaulting officer on most in condition of दो 2019 में भी एग्जीक्यूटिव आपके इंजीनियरिंग चीफ ने लिखा था कि इसका रिवाइज एस्टिमेट दीजिए, तब भी नहीं हुआ कुछ। अब कर रहे हैं सर, अब कर रहे हैं, क्या मतलब? अब पैसा Why भी you जमा want, होगा, प्रोसेस में भी है, इनको डिस्पर्स भी हो जाएगा इमीडिएटली, एंड आई विल लुक इन पर्सनली लुक इनटू द मैटर एंड डायरेक्ट द LAO टू डिस्बर्स द अमाउंट इमीडिएटली। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD is not present today, although he was present on the last date of hearing, but the case was adjourned. In his affidavit, in his compliance report, document number 2985/23, he is admitting lapses on part of the department. By not including the amount of compensation and estimate
for submitted for the construction of road. For which a show cause notice has been issued to the defaulting officer. Copy of the show cause notice has not been filed. सर कहाँ किया है इसमें? नहीं है. इसके बाद में सेकंड वाला एक और हाँ? उसने रिप्लाई बैक किया तो सेकंड वाला का है? अच्छा ये सेकंड वाले में R4. Has been initiated. Additional compliance report has also been filed, in which 3 show cause notices have been are annexed. Fact remains that till today the petitioners have not received any amount of compensation. Now the SDO is proceeding for compliance of section 11 of new act or old act? New Act. New act. Notification has also been कहाँ? Where is that? और ये पर्सनल है. For acquisition of the land for the public purpose. But the fact remains that the land had already been, possession of the land had already been taken in the year 2016, 13, and the road has been constructed. बैक डेट में कैसे होंगे एक्विजिशन प्रोसीडिंग? एक्विजिशन प्रोसीडिंग मैंने भी सही कहा था, पर ठीक है कि नोटिफिकेशन तो करना ही पर पड़ेगा. लिखा रहता है कि प्रपोज्ड प्रपोज्ड तो है नहीं अब. ये तो आपको but it has to be ascertained whether they are the they are the landowners or not. That may be also one of the person. अगर इनके अलावा कोई और होंगे तो वो भी आ जाएंगे. एक्विजिशन कैसे होगा जब लैंड आप ऑलरेडी ले चुके हैं? वैसे तो सिर्फ कंपनसेशन पे होना है, बाकी व्हाई कंपनसेशन ऑल दीस फॉर्मेलिटीज और डिले क्यों कर रहे हैं सब पर? लैंड खरीदिए इनसे, अब सेल डीड होगी और कुछ नहीं होगा. एक्विजिशन कैसे होगा? Let on the next date of hearing argument be advanced whether by conducting a proceeding, by taking the land at 10 years back, after taking the land 10 years back, now the acquisition proceedings can be drawn, or the respondent state is required to purchase the land from the petition. Address करिए आप एग्जाम में, ऐसा नहीं होता. Secretary shall remain present at the next date of hearing. 22nd. नहीं, मैंने ये रिकॉर्ड पर हमारा 30th January. Next. खाली होता है.